Hello and welcome to the chapter number 8, that is class and object in Java, right? So in previous chapter we already study about what are the different OOPS concepts that are available into the Java. In this chapter we will learn about the practical implementation of the all different OOPS concepts, right? So in Java, if you want to print any single message, then also you have to create a class. Without class you are not able to perform any single line of code, right? So using object-oriented concepts, we can divide our whole large program into the very smaller part that are very easy to develop as well. And that smaller part is known as the module. A module can be practically implemented with the help of the class only, right? So module will practically relate with the class. So class is what? So class is the collections of the attributes and method. Attribute stands for variable and the behavior stands for the different methods, right? So for example, if you want to create a class named room, so in that we can have different attributes of the room. For example, room have certain length, weight, height and number of windows, right? This we can represent it with the help of the variables. And also we have the different behavior. That means we can set the values of this attribute, right? That we can implement it in a set attribute method. We can calculate area of the room, that we can implement with the help of area method, and we can display this attribute as well with the help of the display method. So let's understand how can we create a class, right? So class we can also call the template for multiple object. That means आपने एक class create कर दिया, then उसके n number of object आप create कर सकते हैं और वो सभी object की basic property same रहेगी, right? मतलब all object have the same set of variable and same set of methods. Now to declare the class in a Java, we have to use the class keyword, right? So this is the syntax of that class followed by the class name. We already study what are the naming convention for the class. Class का name देने के लिए generally हम camel case follow करेंगे, right? That means हर एक word का first character capital होना चाहिए. So this is the class name given. Inside class, we can create a block with the help of the curly bracket. Curly bracket is again mandatory. Inside that, we can declare the different variable over here and define different methods over here, right? So this is the syntax. How can we create a class, right? Let's understand practically as well. तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास स्पेस क्लास का नेम फॉलो करेंगे, राइट? इसके अंदर हमारे पास एक ही वर्ड है, तो मैंने रूम का आर कैपिटल डिफाइन किया है. अगेन इट्स नॉट अ सिंटैक्स, okay, but this is one convention, मतलब it's good to follow. If you not follow, there is a no error at all while running this code. इसके अंदर आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? हम सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेंथ एंड विड्थ. So these are known as the variable. Now उसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं with the help of method, right? So public void set method एक declare कर सकते हैं, right? Inside that we can set the value of this variable, right? We can set length equals to 20 and width equals to 30. So this is the first method, right? We can declare one more method to display this attribute as well. We have other calculation method as well. So in this, if you want to print any message, then we have to write system.out.println. इसके अंदर हम दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, लेंथ एंड विड्थ. So our basic class structure is ready over here, right? But right now we are not able to executing because to access this variable and method we have to learn another concept, that is object, right? So let's understand how can we create the objects, right? So creating object basically involves the three steps. First step is the declaration.
राइट, दैट मीन्स however we declare the variable of integer type, यहाँ पर हमने integer type का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो सेम वे क्लास इज ऑल्सो वन डेटा टाइप, राइट। तो उस डेटा टाइप का हमें क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि डिक्लेयर करो, राइट। डिक्लेयर करने की सिंटैक्स होगी क्लास नेम followed by what are the variable name, that is object name you want to give. The second is the instantiation, that means क्लास के अंदर अगर आप डिक्लेयर करोगे तो कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होगी और हमें फिजिकली वैल्यू स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी अलोकेशन चाहिए। तो वो मेमोरी अलोकेशन कब होता है, whenever you instantiate that object with the help of the new keyword, right? So whatever object name is given equal to new and class name, right? So this syntax we follow to allocate memory basically, right? And after that initialization, that means we can assign the default value to the variable, right? So these are the three-step process we can declare, right? Remember one thing, in this one R1 is known as a reference and new room is known as object, right? The whole syntax is something like this. In main method, I try to, you can create in a single line as well. Room R1 is equals to new room. ओके तो इसके अंदर R1 जो है उसको रेफरेंस बोलेंगे और न्यू रूम है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दिस टू आर द टू डिफरेंट कंसेप्ट, राइट। अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट, उसके अंदर क्या स्टोर रहता है, वो रेफरेंस मतलब एड्रेस स्टोर रहता है जहां उसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर होगी, राइट। दैट मीन्स इसके अंदर लेंथ और विड्थ ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, उसकी कोई एक्स लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हुई है और वो एक्स लोकेशन का एड्रेस जो होगा वो एड्रेस किसके साथ होगा, दैट एड्रेस वी हैव विद द R1 के पास उसका एड्रेस होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये कोड रन होगा तो R1 के अंदर लेंथ और विड्थ का मुझे एड्रेस मिलेगा, राइट। तो R1 के पास से हम उसका एड्रेस लेंगे और वहां पर जाके उस दोनों की वैल्यू को फैच करेंगे, राइट। दिस हाउ इंटरनली इट वर्क व्हेनेवर वी रन दिस कोड। नाउ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हमारे कंप्यूटर में एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी रहती है, दैट मेमोरी इज नोन एज अ हीप मेमोरी, राइट। हीप मेमोरी के अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्रिएट उसका वैल्यू स्टोर होगा। दिस इज अ कंबाइंड डिक्लेरेशन ऑफ दिस टू, राइट। तो वन लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और टू सेपरेट लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ओनली सिंटैक्स डिफरेंट, अदरवाइज वर्किंग इज कंप्लीटली सेम। नाउ क्लास के अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट, यहाँ पर दिस इज माय क्लास, राइट। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लेंथ एंड विड्थ। इस वेरिएबल को इन प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी वी कैन से इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स वेरिएबल दैट वी डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड द क्लास, और डायरेक्टली क्लास के अंदर जो मेथड डिक्लेयर होती है, राइट, जैसे हमने सेट और डिस्प्ले मेथड की है, दिस मेथड इज नोन एज द इंस्टेंस मेथड, राइट। तो दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल एंड दिस इज द इंस्टेंस मेथड। नाउ इफ यू क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, आपने एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए R1 और R2, तो दोनों का मेमोरी क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, राइट। एज वेल एज उसके अंदर जो एट्रीब्यूट आपने लिए हैं, राइट, उस एट्रीब्यूट के भी R1 के लिए सम डिफरेंट वैल्यू, सेम वे R2 हैज सम डिफरेंट वैल्यूज, राइट। तो दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट विल वर्क। नाउ इसके अंदर whenever you create the object, तो मेमोरी अलोकेट करने के लिए वी यूज वन स्पेशलाइज्ड टर्म कंस्ट्रक्टर दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेमोरी अलोकेट करेगा। नाउ आपने जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है उसका यूसेज आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेमोरी रिलीज भी करनी पड़ेगी, ओके। अदरवाइज अननेसेसरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेंगे, राइट, तो हमारे पास मेमोरी का इश्यूज आ सकता है। तो उस अनयूज्ड ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में रहते हैं, राइट, जो उसके स्कोप में से बाहर चले गए हैं, जिसको अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट, तो उसको क्लियर करने के लिए जावा हैज द ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म इंस्टॉल,
राइट वो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते उसकी मेमोरी को रिलीज करने का काम करेगा, दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, दैट इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय द जावा इटसेल्फ. नाउ you know that object is also known as the instance of class, right? तो उसको क्लास का इंस्टेंस बोलेंगे जिससे वो मेमोरी क्या करता है, अलोकेट और डीअलोकेट करेगा. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी, हमने ये ऑब्जेक्ट तो बना लिया, राइट? सो वी नो द सिंटैक्स, हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. अभी इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको ये वेरिएबल और मेथड एक्सेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स लर्न दैट. तो बेसिक सिंटैक्स दैट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट, डॉट करके इंस्टेंस वेरिएबल नेम और मेथड नेम, राइट? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई भी वेरिएबल और मेथड को यूज करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे. इफ यू हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर इन अ सेम लाइन देन इट एसोसिएटिविटी विल वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फर्स्ट मेथड पहले कॉल होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर के अंदर वो एग्जीक्यूट होके हमें प्रोवाइड करेगी. इन जावा जनरली all the variable we keep as a private and all the method we keep as a public so that variable को directly कोई access ना कर पाए, right? That we will study in the access modifier part, right? That we will study later on. Now one more thing, यहाँ पर हम object का use करके उसके method call कर रहे हैं. So we have the two. First we have method is the set method and the second we have the display method. तो ये दोनों मेथड मैंने सेट कर दी है, राइट? इसको जब भी अभी हम रन करेंगे तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ प्रिंट हो गए. नाउ अगर आपने उसको न्यू कीवर्ड का यूज करके इंस्टेंसाइज नहीं किया होगा, दैट मीन्स इफ you have declared something like, right? So you can see the red line over here, right? तो without new keyword आप उसकी कोई भी वेरिएबल और मेथड को यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर आपको एरर मैसेज शो हो रहा है कि R1 is not have been initialized, वो मेमोरी में कहीं इनिशियलाइज नहीं हुआ है. Okay, let's understand another concept, that is the class variable and class method. इसके अंदर हमने स्टडी किया है, that is the instance variable and method. Same way we have the class variable and method. Now अभी हमने प्रीवियस के अंदर जैसे स्टडी किया कि ये जो सारे एट्रीब्यूट्स थे ये कैसे थे, दिस इज अ इंस्टेंस. इंस्टेंस मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी भी डिफरेंट होगी और उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, राइट? अभी क्लास वेरिएबल और मेथड किसको बोलेंगे, तो क्लास वेरिएबल और मेथड के अंदर जो मेमोरी होगी दैट इज द शेयर्ड वेरिएबल अमॉन्ग ऑल द ऑब्जेक्ट. मतलब आपने लेंथ और विड्थ को एज अ स्टैटिक और क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होगी और वही मेमोरी को R1, R2, R3, R4 जितने भी ऑब्जेक्ट यूज किए हैं वो सेम मेमोरी को एक्सेस करेंगे सो दैट इट कैन एक्सेस द सेम वैल्यू एज वेल, राइट? दैट इज नॉट केस इन द इंस्टेंस. सो क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, यू हैव टू यूज द स्टैटिक कीवर्ड, राइट? स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं एज वेल एज मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? नाउ क्लास वेरिएबल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो अगर आपको कोई भी मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो इन दैट केस हम उस मेथड या वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, एज अ क्लास या एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे. नॉर्मल मेथड जो होती है उसको एक्सेस करने के लिए कंपल्सरीली हमें क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है. बट अगर आप उसे एज अ क्लास या स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट से तो उसको कॉल कर ही सकते हैं बट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एज वेल, दैट मीन्स क्लास से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टडी. तो वेरिएबल अगर हम स्टैटिक करेंगे तो वी हैव टू जस्ट पुट द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर दैट. तो इससे क्या होगा, R1 और R2 सभी के लिए उसकी मेमोरी कॉमन हो जाएगी और सभी सेम वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, राइट? और मेथड को भी स्टैटिक करना है
तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देना है, राइट। अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया है तो इन दैट केस आपको ये कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्टली हमारा क्लास का नेम क्या है, रूम, डॉट डॉट करके आप सिर्फ डिस्प्ले मेथड यहाँ दिखा रही है, डिस्प्ले मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। स्टैट मेथड को हम नहीं एक्सेस कर सकते, क्यों? बिकॉज वो स्टैटिक नहीं है, राइट। तो दिस वे यू कैन एक्सेस। वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आप मेथड को स्टैटिक बनाते हैं देन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल ओनली, राइट। इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ से अगर हम ऊपर से ये स्टैटिक कीवर्ड हटा देंगे, right, then you can show the error over here. So static method can access only static variable. Now Java के अंदर भी बहुत सारे built-in classes and methods available है that is declared as a static. One example of that is a math class, right? Math is one built-in class which is available in Java. उसके अंदर we have one method named the sqrt, right? This method is a स्टैटिक मेथड, मतलब उसको यूज करने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और जिस वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट देना है वो आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड कर देनी है, राइट। उसके लिए अननेसेसरी आपको 2 लाइन सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वे इफ यू नोटिस दैट कि जो भी आप मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, राइट, दिस इज अवर मेन मेथड, राइट। मेन मेथड को भी हम ऐसे क्या डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक, सो दैट हमारी मेथड को भी क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को कॉल करना पड़ेगा, सो दैट कंपाइलर विल कॉल दिस मेथड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास दैट इज अ रूम मेन। रूम मेन का एक्सेस किए बिना ही वो इस मेथड को कॉल कर सके, राइट। सो दैट इज वन रीजन व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर द मेन मेथड एज अ स्टैटिक। So basically we have the three set of variables, three types of variable available in a Java. First one is a local variable. So local variable are the variable that we have declared inside any method, right? आप कोई भी method के अंदर जो variable declare करेंगे वो local हो जाएंगे। तो यहाँ पर for example मैं कोई variable declare करूंगी time, तो ये time जो variable है वो कैसा हो गया, this is considered as a local variable. सेकेंड सेट ऑफ वेरिएबल इज इंस्टेंस वेरिएबल, जो क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं दैट इज नोन एज अ इंस्टेंस, राइट। और अगर आप उसको एज अ स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन से वेरिएबल हो जाते हैं, दैट बिकम द क्लास वेरिएबल। ओके, सो वी हैव दिस थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, राइट। लोकल वेरिएबल इनसाइड मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल inside class, and class variable is also inside class but one keyword, static keyword. Let's learn about another concept that is the polymorphism, right? Polymorphism is again one of the important concept. We revise quickly. Polymorphism means what? So polymorphism means one name having the multiple form. That means एक ही चीज different situation में differently behave करे, that is known as the polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप थे, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, राइट। इन कंपाइल टाइम वी कैन इंप्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट मेथड ओवरलोडिंग, right? So method overloading basically we use to implement the compile time polymorphism. Let's understand what this method overloading is. So functions, method means functions, right? Functions having the same name. आपने 3 मेथड डिक्लेयर की है, वो सभी की नेम सेम है, बट इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर, उसके पैरामीटर डिफरेंट है, तो दैट इज नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग. That is name same है, but according to argument that behavior will completely change. So that is the example of the method overloading. Here we have some example, and this max method will take 2 arguments, right? That means it will find maximum out of 2 value only. In this, max will find the maximum out of 3 value of the integer data type, and in third case, max will find the maximum from 3 values, but that is of point, that is double data type, right? So name is same, but implementation is different, right? Let's quickly perform one small example for that. I declare class test. Inside that, public void, I declare sum method, right? It takes 2 integer value
and we perform the addition of this two value as the a plus b. It perform addition of two number, right? We have one more method. These two methods have exactly same name, but what is the difference is number of argument is different, right? And in this, I perform addition of three number instead of two. So whenever if we want to run this, तो यहाँ पर हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. That is done with. Now, if we want to perform, if we want to pass two argument, right? तो वो दो नंबर का एडिशन करेंगे. So we have the add 45. और यहाँ पर अगर हम तीन वैल्यू पास करेंगे, then it perform the addition of three number. We rerun this and we have the addition of three number, right? We rerun this. So this is, we have addition of three number, right? So this is a simply method overloading how we can implement. Next, we will learn about the constructor. So whenever you create the object, so we need to have the memory initialization, right? And that memory initialization is done with the help of the constructor. Constructor is nothing but one method but having some special characteristics, right? First, we understand what is the difference between general method and constructor method, because constructor is also considered as one function or one method, right? So first, in normal method, we can give any name to the method, whatever we like. But in constructor have the same name as the class. तो अगर आपने क्लास का नेम टेस्ट दिया है तो कंस्ट्रक्टर का नेम कंपलसरी टेस्ट ही देना पड़ेगा, राइट? वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन कंस्ट्रक्टर वी डोंट हैव टू स्पेसिफाइड एनी रिटर्न टाइप, राइट? आप जब भी क्लास डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हमने जो void लिखा है, void इज व्हाट? इट्स अ रिटर्न टाइप. दैट मीन्स ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. But in constructor, we don't have to write any return type at all. Okay, that is the second characteristic. Third characteristics, normal method जो भी आप डिक्लेयर करते हैं उसको आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, राइट? आपने यहाँ पर सम नाम की मेथड डिक्लेयर की है, उसको यहाँ पर हमने t.sum करके कॉल किया है, right? But in constructor we don't have to call at all, right? Whenever you create the object of that particular class, constructor will call automatically, right? आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है. It cannot be invoked explicitly anywhere, right? Now, like function, we can also constructor overloading. That means आप constructor के अंदर भी same class के अंदर multiple constructor declare कर सकते हैं. All constructor have the same name as a class name but different argument, right? So this is the basic characteristics of the constructor. आप अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी constructor provide नहीं करते हैं, right? So in that case, Java will automatically give the no argument constructor. Without constructor, आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, right? So आप कोई भी, हमने यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर हमें पता ही नहीं था, हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, but no, Java will automatically created one constructor for you, right? But आपको explicitly constructor define करना है तो आप क्लास के अंदर explicitly constructor भी declare कर सकते हैं. So if there is a no user defined constructor, then default no argument constructor will be there, जो उसके default value को initialize करेगा, right? तो यहाँ पर for example, यहाँ पर हम simply a और b, right? यहाँ पर हमने कोई value initialize नहीं की है and we have the display method.
So this is a simple class having the variable and method, right? और यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू सेट करने के लिए कोई भी फंक्शन या मैन्युअली भी कहीं पर डिफाइन नहीं की है. तो whenever we create object of this class, that is test new test, और हम उसकी डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, right? So if we check the output now, so we have the value assigned over here is 0 and 0, right? This default value will automatically provided by its default no argument constructor, right? Which are declared automatically. So that's it for this part 1. Thank you.